Okay, hello class 10th. Now today we are continuing with the numericals, same numericals which we are doing, that is from the change in phases. And I have selected, we are continuing with the questions जो हमने किए थे उसके आगे हम लोग चल रहे हैं. I am doing question number 3 for you. In this question number 3, he is saying you a molten metal of mass 150 grams. A molten metal of mass 150 grams is given to us and is kept at melting point, means that the melting point of this molten metal is 800 डिग्री सेल्सियस. मीन्स कि आपने उसको मेल्ट करके रखा हुआ है. दैट मीन्स ये किस में है? लिक्विड स्टेट में है. When it is allowed to freeze at the same temperature, it gives out 75000 joules of heat energy. मीन्स कि जब आप इसको फ्रीज कर रहे हो इसी टेम्परेचर पे ये फ्रीज भी हो जाएगा. तो जो हीट इसने रिलीज करी कितनी रिलीज करी. दैट मीन्स लिक्विड से आप सॉलिड स्टेट में इसको चेंज कर रहे हो. सो ही इज आस्किंग अस व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल. फर्स्ट पार्ट में, दैट इज द ए पार्ट में निकालना है क्या. In the A part we have to calculate the specific latent heat of this metal. So for calculating this, what we have to do, we simply use Q equals to ml. This is the formula because here the state is not changing, so we simply use Q equals to ml. M is given to us, it is 150. Q is given to us, it is 7500. 3 zeros are there. And M is given to us, it is 150, and L we need to find. So 10 gone with 10, 15 1 15 and 15 5 just. So how much? L equals to 500 joules per kg. This is the answer. Joules per gram. Joules per gram is the answer. 500 joules per gram is your answer. Why grams? Because we have taken the mass in grams, so our answer is joules per gram. In the second part of the same question, if the specific heat capacity of the metal is 200 joules per kg per degree Celsius, how much additional heat energy will the metal gives out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स इसको 800 डिग्री सेल्सियस से -50 पे लेके जाना है. ओके, 800 से -50 पे लेके जाना है. तो कितनी एडिशनल हीट ये रिलीज करेगा, दैट वी हैव टू फाइंड. मींस कि नाउ इन दिस कंडीशन द स्टेट विल नॉट चेंज. वो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा. सिंपली उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. मींस कि वो 800 से जाएगा -50 डिग्री. सो इन द बी पार्ट, first of all let us find out the value of del T. So del T will be equals to initial temperature minus final temperature. So initial temperature is 800 minus final temperature, final is -50. So the value of del T will be 850 degrees Celsius. So this is the temperature. You can take it in Kelvin also. Now after this what we have to use, because the state is not changing, so we have to use Q equals to mc del T. The del T, the value of del T we have already find it out. The mass is how much? The mass is 150. So put the value of mass 150 and the value of C is given to us. It is how much? It is 200. So write 200 here into how much? 850. In the book the answer is given in joules per in joules. So we have to convert this into kg also. So 1 2 3 4 5 6. So now multiply them. On multiplying them we get 25500 joules. This is the value of the Q. So this is the second part of the question. Now moving to question number 4, let me read the question for you all first. In question number 4 he is saying you a refrigerator convert 100 grams of water. Convert 100 grams of water means that the mass of the water is 100 grams. And at 20 degrees Celsius, its initial temperature is 20 degrees Celsius. The specific heat capacity of water is 4.2 joules per gram per Kelvin. And calculate the average heat of heat extraction in watt. Means के power we have to find extraction. तो power we have to find because वो क्या बोल रहा है? He is saying, let me read the question once again. A refrigerator convert 100 grams of water. 100 grams of water को जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, आइस में कन्वर्ट कर रहा है
एट -10 डिग्री, -10 डिग्री आइस में उसको वो कन्वर्ट कर रहा है, और कितने टाइम में कर रहा है, 73.5 मिनट्स में कर रहा है। कैलकुलेट द एवरेज हीट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। क्या निकालना है, पावर निकालनी है, एवरेज हीट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। दैट मीन्स पावर निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड, सो पावर इक्वल्स टू वी नो Q अपॉन क्या होता है, Q अपॉन T। Q upon T will be your power. So what we have to do, we have to find out the value of Q and then we have to find out the value of this T. So now let us see how the change take place. आपके पास क्या है, you are having a water, H2O है, H2O का टेम्परेचर कितना है, H2O is 20 डिग्री सेल्सियस पे है। सबसे पहले ये H2O जाएगा आइस में, H2O सबसे पहले H2O 0 डिग्री पे जाएगा। ओके, फिर 0 डिग्री H2O जाएगा आइस में, 0 डिग्री आइस में, एंड देन 0 डिग्री आइस में, एंड देन दिस 0 डिग्री आइस विल गो टू आइस अगेन, और कितना टेम्परेचर, -10 डिग्री आइस में। सो इन दिस वे द चेंज टेक प्लेस। यहां पे जो हीट चेंज, जो हीट the heat which it's release, we have to use that, say it is Q1, यहाँ पे say it is Q2, और यहाँ पे say it is Q3. So Q equals to how much? Q equals to Q1 plus Q2 and plus Q3. So what is the value of Q1? Q1 में अगर हम लोग चेक करें तो then there is no change in the state. So यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? We have to use Q equals to MC del T plus what is the value of Q2? Q2 क्या है? In this is Q2. Q2 में क्या हो रहा है? H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आइस में. So here we have to use Q equals to ML. Then what about this third stage में आइस में कन्वर्ट हो रही, तो again we have to use MC del T. Okay, so the value of M will be same. इसको C1 ले लेते हैं बिकॉज अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज। इसको C या C डैश ले लो, चलो इसको C डैश ले लो, ये C ले लो। And what is the value of M? The value of M is 100, so put 100 here. The value of C, specific heat capacity of water, is 4.2, so 4.2. What is the value of del T? Del T means 20 डिग्री सेल्सियस पे था, 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री पे गया है, तो that means del T will be 20 only, plus ML, M कितना है, 100 है। What is the value of L? L will be 336 plus what is the value of M here? M will be 100 again. What is the value of this C? This C is the specific heat capacity of ice, so it will be 2.1 into, okay, into how much? MC del T. What is the value of del T? Del T will be 0 से -10 पे जा रहा है, तो del T will be 10 only. So इनको मल्टीप्लाई किया, so what we are getting? We are getting 4200, I think. We are getting 4200, so they will get multiplied at 8400. We get 8400 from here, and from here we are getting 33600, plus from here we are getting 2100. सबको ऐड करेंगे तो we get 44100. So now going for the value of this P. P क्या है आपका? P will be power, that means rate of heat extraction. So power equals to Q by T. The value of Q we have find it out. It is 44100 upon time. Time is given to us in 73.5. इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, तो 0 से आप 0 काट देंगे, बाकी ये सब कट जाएगा, एंड 10 वी आर गेटिंग. सो हाउ मच? इट इज 10 वॉट इज द आंसर. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर fourth. Only one part is there. So in this way you can continue with the other questions, and I will give you the solution for all the questions. Solution सबका दे दूंगा, but it's take time beta, because it is impossible for me in 10 minutes do all the questions. So some questions you have to try, and some I am trying it here. Okay, when you will try the question, if you have any problem, you can ask me that problem
like some of you are asking me, but not all. So please try the questions and then ask me your problems. So for today, only this much. Thank you very much.